We are going to solve LeetCode question number 75, sort color. So what is the question is saying? So we are given an array of objects, red, white, blue ball, and we have to sort like this. We have zeros at front and ones at middle and twos at last. So what we can do in this type of problem, we can simply use the array dot sort and the whole array will get sorted 0 1 2. But in this question this is mentioned that we cannot use the built-in function. So another approach to solve this problem is two pointer. We can use two pointer and we can place them at the indexes, and if we encounter any we just take another pointer also after the two pointer, like 3 pointer, and we just keep forwarding the pointer and check. If we encounter 0 1 2, we will swap with the another indexes like j and k. So आपको इतना समझ में आया, नहीं आया तो हिंदी में बता दे रहा हूँ. अपने को क्या करना है कि दो पॉइंटर लेने आई और जे, और एक और लेना पड़ेगा के के लिए, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल है. ठीक है, 1 0 1 2, तो अपन के को लास्ट में रख लेंगे और आई और जे को पहले, और एक उनमें से कोई सा भी वेरिएबल अपन आगे के लिए भेज देंगे जो कि चेक करेगा कि आगे वाले इंडेक्स पे क्या है. जैसे उसको 0 मिलेगा तो वो जे वाले के साथ स्वैप कर देगा और जे को आगे बढ़ा देगा और खुद भी आगे बढ़ जाएगा. उसको अगर वहाँ पे 2 मिलेगा तो वो के वाले के साथ स्वैप कर लेगा और के को वहाँ से माइनस करवा देगा. ठीक है, तो ऐसे करके वो लास्ट तक पूरा सॉर्ट कर लेगा. और 1 जैसे मिलेगा तो 1 के साथ कुछ नहीं करना है अपन, तो 1 उसी प्लेस पे रहेगा, उसको आगे बढ़ा देंगे. सो वी कैन राइट आई इज टू 0 एंड जे इज टू 0 एंड के इज टू nums dot length minus 1. Okay, and now we are just write the condition if I is less than equal to k, because we are forwarding the I to the every indexes. So now we will check the condition. If we encounter I is equals to if we encounter 0, then we will swap with the jth position, because we have to place I and j to the 0. For j representing the 0 and k representing 2 and 1 is representing by I. So we have to swap with I and j, and now after swapping 0 will get placed to the first in the front, and we have to increment I and as well as j. Now what we have to do, we have to check another condition, like if we encounter nums of I is equals to 1. So what we have to do, we just keep moving forward, so we just increment I. And now in the third condition we have to check if nums of I is equals to 2, we just swap with the k. So right swap, we have to pass nums and I and k, and we have to decrement k because to place at the last position, and after placing we have to just come one step backward from the rightmost direction. Okay, so now we have to write our swap function. So for that we already known the swap function, so we have to pass our array. तो अपन एरे पास कर दिया, आई एंड जे इंडेक्स पास कर दिए जो स्वैप करने हैं. तो अपन थर्ड वेरिएबल के साथ, टेम वेरिएबल के साथ इसको स्वैप कर देंगे. तो वी हैव नम्स ऑफ आई एंड वी हैव नम्स ऑफ आई में आ जाएगा अपना नम्स ऑफ जे, एंड इन नम्स ऑफ जे में आ जाएगा अपना टेम्प. नाउ our array becomes sorted. Let's check it will run or not, or giving some error. Okay, now our test cases is complete, and try to submit it. So the time complexity of the solution is about big of n, because we are traveling with the pointer and we are not using any nested loop. So only
linear time complexity we have. So big O of n, and the space complexity is constant because we are not using any extra space. So अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में. ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का था, बट इजी क्वेश्चन है. ओके.